Hello, Assalamualaikum. Hello, hello. Hello, Assalamualaikum. किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? एप्स लिख के जवाब दें। हेलो, हेलो, हेलो। ओके, आज हम लोग अर्थमेटिक और कंटिन्यूशन करेंगे। उससे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक सब टॉपिक जो है जो किया गया था वो फ्रैक्शन। Fractions will start with addition and subtraction. So let's say if I give you an example, 1 upon 2 plus 2 upon 2, uh, can it be added without LCM? क्या ये दो नंबर्स, क्या ये दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो सकते हैं LCM के बगैर? हेलो। तो the answer is actually yes, और इसका आंसर होता है आपका 3 upon 2, so that will be 1.5. So 1 upon 2 upon 2 equals 3 over 2, which equals to 1 whole 1 upon 2. सिमिलरली जब आप नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 upon 2 minus 1 upon 2, that will be equivalent to 2 upon 2 if you look at the answer as 1. Okay, so fraction basically होता क्या है? Basically, let's start with the introduction of fractions. Before, like, fraction is like अगर आप पिज्जा slices, when you like buy a pizza, तो slices में divided होता है, like 4 slices, 8 slices, 10 slices, 12 slices, 16 slices, and so on. So if I like take 3 slices or like 4 slices, let's say the pizza was of 8 slices, so the fraction will actually be 4 over 8. So this will be 4 over 8. And similarly, अगर
अगर मेरे पास एक होल पिज्जा, मैं पूरा पिज्जा खा लूँ, so that will be equivalent to one. So out of like how many total slices I've eaten, that is known as a fraction. सही है. इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैंने पिज्जा का एक स्लाइस खाया है और चार स्लाइस का पिज्जा है, तो 1/4 जो है ना, वो उसको फ्रैक्शन कहते हैं. सही है. Any confusion? Yes, sir. Similarly, अगर let's talk about the first and sub, तो fraction basically होता क्या है? Fraction, the top of the part of the fraction जो है वो न्यूमरेटर कहलाता है. ये नीचे 1/6, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इस चीज को मैं कहूँगा द न्यूमरेटर. सही है. एंड and from that, if I look at it again, 1/6, the 6 is actually the denominator. So that is what is known as a fraction. Okay, तो अब हम लोग पहले विदाउट फर्दर हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो है जो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का, इसमें एग्जांपल्स पहले भी करा था. So let's look at another example of adding subtracting fraction. So 7 over 8 minus 1/5. अब 8 और 5 का LCM 40 हुआ. 35 over 40 minus 8 over 40. So this will be 27 over 40. Okay. So ये हमारा 27 over 40 आ गया. Okay. अच्छा अब हम लोग मूव कर रहे हैं multiplication of fractions. So how do you multiply a fraction? So multiplication, you could do it like this. For example, आपको दिया हुआ है 4/7 into 2/11. So this will be 4 multiplied by 2 and 7 multiplied by 11. So this will be 8 over 77. Similarly, 1 whole 1/5 multiplied by 6 whole 2/3. So it will be 6/5 multiplied by 20/3. This will be 6 into 20 divided by 5 multiplied by 3. So 120 or 15, yeah, and equals to 8. Similarly, एक और भी तरीका होता है. For example, अगर मैं यहाँ से I reduce this, I could do this with the table of 2. This is known as cross multiplying also. यानी कि इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया. So this will be 2 and 5 will divide by 1 and this will be 4 and this will be equivalent to also 8. So 2 into 4 equals 8. Okay. ये आंसर क्लियर है. Okay. So ये आपका होगा. This is known as the multiplication. Now let's look at the division of fractions. Division is also known as reverse multiplication because division को आप multiplication में convert कर देते हो via the inverse. So for example, this is an example 3 over 7 divided by 1/7. अब इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये 7 over 1 हो गया. ये 7 7 कैंसिल हुआ और आंसर मेरा 3 आ गया. सेकेंड एग्जाम्पल 4 और 4/5 को 1 और 1/15 से डिवाइड किया. ये इसको 5 multiplied by 4 plus 4 will be 24. 15 multiplied by 1 plus 1 will be 16. So 24 over 5 divided by 16 over 15. 24 over 5 multiplies to the inverse of 15 over 16. 3 मैंने कैंसिल किया. यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 3 बच गया.
and this will be 3 multiplied by 3 divided by 1 multiplied by 2, 9 over 2, and we have to rewrite it as a mixed number because usually exam में simplest form में मांगता है, so this will be 4 whole 1 upon 2. Okay, so now let's look at another subtopic of fraction, which is fractions to decimals. So how can we write fractions into decimals? So for example, we have to change 3 over 8 into decimal. So simply आप करेंगे 3 को 8 से divide, and well, you will use the long division and we get the answer 0.375. Now कुछ डेसिमल इस तरह होते हैं कि रिकरिंग हो जाते हैं जब उनको फ्रैक्शन टू डेसिमल करते हैं. फॉर एग्जांपल 4/15 is equal to 0.2666666666666. तो आप इसको लिखेंगे एज 0.26 और यहाँ पर डॉट लगा देंगे बिकॉज दिस इज अ रिकरिंग डेसिमल. ओके, now similarly आपको recurrent decimals कुछ example देंगे. And now let's look at कि आप डेसिमल्स को अगर कोई मान लो डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको वहाँ पे फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल है 0.58 to a fraction. So 0 multiplied by 1 and 5 multiplied by 1 upon 10, so 8 multiplied by 1 upon 100. So 50 over 100 plus 8 over 100, this will be 58 over 100, and this will be 29 divided by 50. So this is ये तो क्वेश्चन में पास पेपर के एंड आई वांट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर ले लिया तो डन लिख दे. Okay, so we're going to be looking at the past paper questions of word problems of arithmetic. तो सिंपली हम लोग अब अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स के पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं. गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको. So this is one of the past paper questions. Number 2003, paper 2, question number 1. So John and Karen opened bank accounts. John deposited 800 in his account. The account pays simple interest at the rate of 5% per year. Or let's calculate the total amount in his account after 3 years. So simply हमें simple interest का formula लगाना है. Will be interest is equal to principal multiplied by rate multiplied by time into 100. So
would write interest equals to principal P multiplied by R multiplied by T divided by 100. So मैं देखूँ अगर मैं देखूँ तो इस सवाल में मुझे प्रिंसिपल 800 दिया हुआ है, रेट 5% है और टाइम मेरे पास 3 years है. So what I'm going to do is simply यहाँ पर interest का formula लिखूंगा. It will be 800 multiplied by 5 multiplied by 3 divided by 100. So this will be 8 and multiplied by 5 multiplied by 3 divided by 100. So $1200 का interest का मतलब 1200 is the money in his account after 3 years. Okay, part A में कोई confusion है? Okay, part B. Garrett deposited 800 in an account. The account pays compound interest at the rate of 5% per year. Calculate how much money there is in her account after 3 years than there is in John's account. Okay, so John का जो है, we know that John का जो हमारा था 1200. Okay, so but before comparison we have to calculate Karen's account. So this will be the formula amount equals 1 plus rate divided by 100 multiplied by n, which is the number of years. So amount जो है हमारा होगा 1 plus 5 over 100 to the power of 3. So 1 plus 5 over 100 to the power of 3. That will be, sorry I forgot मैंने 8 I forgot principal multiply करना भूल गया. So 800 I will multiply होगा. So 800, so it will be 926.1. The value of interest is amount minus principal. So the interest is the amount actually is in 926.1 minus 100 will be 800 be 126.1. So 1200 minus 126.1 equals to think I've done a mistake. Oh yes. Principal निकालना था actually. So it should be PRT divided by 100.
56.1 minus 800. I think that will be the difference. 100 mistake हो गई थी तो ये आपका आ रहा है 273.9. Okay, so last part is Leslie borrowed a sum of money at 10% per year compound interest. After 3 years, he owed a total of 532.40. Calculate how much he owed. So ये हमें मालूम है कि 10% per year है. This is actually the rate. 10% is the rate, and the total amount owed 532.40. And तो हमारा अमाउंट एक्चुअली इंटरेस्ट एक्चुअली आफ्टर 3 years है 532.41 है 40 है. तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने डाला तो 532 पॉइंट अमाउंट आईडी. कैन यू गिव मी आइडिया कि क्वेश्चन नंबर पार्ट बी को किस तरीके से सॉल्व करना है. इससे पहले मैं सॉल्व करूं 66 का पार्ट बी. Anyone? 66 का पार्ट बी. पार्ट बी 66 का पार्ट बी. Anyone? कोई भी मतलब कैसा कैसे सॉल्व होगा. वन पॉइंट फाइव 1.5 किसका आंसर है पार्ट बी का. एनीवेज ये क्वेश्चन में आप लोगों ने सॉल्व करे थे पार्ट बी 66 का. क्वेश्चन 66 पार्ट बी. Here number 2003 paper to question was okay. Is a task for you guys. Okay, so let's do another word problem of arithmetic. Uh, okay,
8. The question. This is an interesting question. So this is of November 2004 पेपर 2 क्वेश्चन 3. इसमें आपको दिया हुआ है टोटल 3 कंपनीज को कितने में खरीदा मिस्टर स्मिथ ने अल्फा बीटा एंड गामा फॉर टोटल ऑफ 80 million. The amount he paid for this company were in the ratio 4 is to 5 is to 7. Calculate how much he paid for each company. So simply हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है कि दिस विल बी एक्चुअली दिस इज आपको रेशियो दिया हुआ है तो हम करेंगे 80 मिलियन को डिवाइड करेंगे इससे पहले 4 से एंड दिस विल बी 80 मिलियन डिवाइड बाय 4 दैट विल बी 2 मिलियन एंड देन उसके बाद हमारा अगला है 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 that will be 1600000 and then 80 million divided by 7 that will be 1 2 this will be 4 1600 यहाँ और मैं आखिरी वाले का निकालना तो सिंपली मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. सो 80 मिलियन minus 40 million minus 160 million 16 million. So he paid for the last company which was 240 million. तो मैंने रेशियो यूज करके तीनों के तीनों निकालने के टोटल जो है this will be 40 plus 16 plus 24 that will give us 80 simply. If you ignore the zero that will actually give us 80 million. So this ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया. Okay, let's now for part B. इसमें कह रहा है when he sold the companies, he made a profit of 12% on the 80 million he paid for them. Calculate the profit he made on the sale of the 3 companies. तो can you tell me 12% उसको प्रॉफिट हुआ यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा 80 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12%. तो कोई इसका आंसर बता सकता है 80 million multiplied by 12%. 80 million multiplied by 12%. Anyone? So it's actually 96 is a lot of zeros. तो उसको एक्चुअली जो प्रॉफिट हुआ है वो होगा 961234 5. सो उनको इतना प्रॉफिट हुआ बट दिस इज a simple calculation. I simply 80 million को multiply किया 12% से so I got the answer कि उनको तीनों कंपनी को बेचकर इतना प्रॉफिट हुआ. मुझे so part A and part B में कोई confusion any confusion part A and part B.
ओके, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो पार्ट सी में लेट्स लुक एट द पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन. तो पार्ट सी says calculate the profit he made on alpha. Now it's actually saying when he sold the companies, he made the profit of 25% on alpha and a loss of 10% on beta. To calculate the profit he made on alpha, the previous profit that he made on gamma. सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं ऑन अल्फा. ना हमें टोटल प्रॉफिट पता है which is 961234 5. So actually it's 9,600,000. सही है. तो हमें इसका प्रॉफिट पता है. तो सिंपली मैंने क्या किया, उसको बोला कि ये पे उसने 25% प्रॉफिट इससे कमाया. इसका 25% लिया हमने. ये हमारा आया 240,000. Okay, so basically 960, इसका हमने 25% लिया. This will be 240,000. So this will be the answer for part A. Simply मैंने 960 2 for 25% लिया, तो मेरा आंसर आ गया 240,000. Now percentage profit that he made on gamma. So मेरे को लॉस जो है 10% है बीटा का. So we need to know the ratio. So 25. Now उसको लॉस हुआ है 10%. So this तो उसको एक्चुअली जो लॉस हुआ है 1 2 3 4 5 is actually 960,000. So know that इसको हमें 960,000 का उसको एक्चुअल में लॉस हुआ है. सही है, बिकॉज मैंने सिंपली टोटल प्रॉफिट में से 10% का वो कर दिया. ओके, सो अब मैंने नाउ दिस इज एक्चुअली 960,000 एंड मुझे लगा है कि 960,000 को अगर मेरा लॉस हुआ है उसमें से 240,000 मैंने प्रॉफिट अल्फा में कमाया है. How did I calculate that? मैं simply 25% से किया था और मेरा आंसर 240,000 आया था. अब मैंने किया इसमें से subtract 960 million को and I subtracted the loss of 960,000. I also subtracted, but मैंने लॉस को मैंने ऐड किया प्रॉफिट में नेगेटिव, और फिर मैंने इसका प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया. सो आई विल गेट टू नो कि मैंने कितना प्रॉफिट जो है गामा में कमाया.
So 960 million minus 960,000 minus 240,000. This will be 840 zeros. Oh, this will actually be plus because it was for a hand. This will be 840,000. So 8,40,000 मैंने इस पे प्रॉफिट कमाया है और सिंपली ये मेरा फाइनल अब इसमें जो है ये मेरा गावा का प्रॉफिट है तो सिंपली मैं क्या कहूँगा 840,000 divided by the actual profit which was 9,60,000 by 0 multiply by 100. So कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? तो बेसिकली इसका आंसर है 8.75. This will be 8.75% and she'll go into 9% basically. तो उसने 9% प्रॉफिट नहीं एक जीरो आई मैंने एक जीरो कम लिख दिया तो तो एक्चुअली इसका आंसर है 9%. 9% है इसका आंसर. So this will be our final answer for part 2. Now we're done with part A, part B and part C of the question. So far हमारे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो चुके हैं और इन तीनों पार्ट्स में तो कोई भी कंफ्यूजन है मुझे बता दे, अगर नहीं है तो क्लियर लिख दे प्लीज. Okay, well, so I think it's clear. So let's move on to the last part. So last part कहता है when the previous owner Mr. Jones sold the company to Mr. Smith for 80 million, he made a profit of 60%. Calculate the total amount Mr. Jones had paid for the companies. तो मिस्टर जोन्स का हमें निकालने कि उन्होंने कंपनीज के लिए कितना दिया, लेकिन हमें मालूम है कि उसने सोल्ड किया मिस्टर स्मिथ को 80 मिलियन और उसको प्रॉफिट हुआ 60% का. सही है. तो उसने एक्चुअल में कंपनी कितनी की बेची? सो सबसे पहले मैंने किया मैंने किया 80 something multiply by 60%, that will give me 480,000.
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक मिनट। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया बिकॉज उसको ये तो हमें मालूम है प्रॉफिट कितना है, लेकिन मिस्टर जोन्स ने कितने में कंपनी को खरीदा वो हमें मालूम है। तो so this will be 80 plus 48, this will be 128, 1 2 3 4 5। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया लास्ट पार्ट का। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बता दे, मैं रिपीट कर दूं। अ, कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो हम लोग इस आज के सेशन को इंशाल्लाह आज एंड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक के थोड़े बहुत हमारे सब टॉपिक रहेंगे वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।